All right, so I've shared my screen. Is my screen visible? Saad, can you please confirm? Okay, all right, thank you, thank you. Okay, all right, okay. So today we will be talking about the 12th chapter again. It is from the trigonometry section, applications of trigonometry. Now here we will be using trigonometry in order to solve different problems. Okay, first of all हम थोड़ी बहुत बात करेंगे about some important, in fact most important things जो कि conic section में भी again and again these terms would be used. ठीक है, I'll tell you what exactly a circumcircle is, incircle is, excircle is. ये बहुत important discussions है इस चैप्टर में. इस बारे में एक दो तीन सवाल होंगे, नॉट मोर देन दैट, बट कोनिक सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अबाउट दिस. ठीक है, इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, so we are talking about the 12th chapter, that is applications of trigonometry. Now you will see कि trigonometry कहाँ कहाँ use होता है. ठीक है, यहाँ पे I will be highlighting the important things. अच्छा, let's talk about the very first circle, that is circumcircle. The circle passing through the vertices of a triangle is called a circumcircle. Okay, it is a circle that is passing through the vertices of the triangle. It is called a circumcircle. What does it mean? This is a circumcircle. ये एक triangle है. ठीक है, इस triangle की तीन vertices हमें नजर आ रही हैं, P, Q and R. This one is P, this one is Q, and then this one is R. We have three vertices. ये जो circle है, this circle right here, ये circle कैसे बना है? It is passing through the three vertices of this triangle. That is why it is called a circumcircle. ठीक है, the circle passing through the vertices of a triangle is called a circumcircle. The center of the circumcircle is called the circumcenter. अब इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा, जैसे ये O है, इसको आप circumcenter कहते हैं. It is the point of intersection of the right bisectors of the sides of the triangle. I'll explain this, do not worry. The radius of the circumcircle is called circumradius. And okay, अच्छा, कुछ चीजें जो याद रखने वाली. ठीक है, कि circumcircle, incircle और excircle में differences क्या है. सबसे पहले हमें समझ में आ गई कि circumcircle is basically a circle that is passing through the vertices of the triangle. ये triangle है PQR, इसकी vertices P, Q and R के ऊपर से circle गुजर रहा है, इसलिए circumcircle है. ये जो center O है, इसको आप क्या कहते हैं? You call it the circumcenter. ये center इस circle का center है, तो उसको हम circumcenter कहते हैं. सिंपल. ये बन कैसे रहा है? हमारे पास इस ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं. मैं अगर इन तीनों साइड्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, फॉर एग्जांपल ये जो OA है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ PQ. क्यू के ये जो लाइन OA है, इट इज बेसिकली मेकिंग अ राइट एंगल विद PQ एंड इट इज बाइसेक्टिंग PQ. अगर मैं इस लाइन को कंटिन्यू करूं तो अगेन ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये QR को दो इक्वल पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड ये राइट एंगल बना रहा है. एंड सिमिलरली अगर मैं OB की बात करूं तो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन PR. ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये एंड ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सर्कल के सेंटर पे मिल रहे हैं. ठीक है, इसलिए हमें पता है कि सर्कम सेंटर इज द पॉइंट where the three perpendicular bisectors meet and it is the center of the circle. ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या जरूरी है? उसके बाद जरूरी है कि सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस सिंपल सी बात है, सर्कम सर्कल का रेडियस है. ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, ये मेरे पास सेंटर है, ये लाइन जो मेरे पास है ये सर्कम रेडियस है, ये लाइन मेरे पास सर्कम रेडियस है, ये लाइन सर्कम रेडियस है. कोई भी रेडियस है सर्कल का, हमें पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है. ठीक है, कोई भी लाइन है सर्कल की जो है वो आपके पास क्या होगी?
वो सर्कम रेडियस होगा। क्वेश्चन वुड बी अबाउट फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग दिस सर्कम रेडियस। ठीक है, उसके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपके पास तीनों साइड्स ए बी और सी नोन हो, ठीक है, आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है और आपने उसको फिर डिवाइड कर देना है बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। प्लीज नोट दीज फॉर्मूलाज डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये कि आपके पास साइड ए है, ठीक है, और आपके पास एंगल ए है, तो आपने ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ए करना है। ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे व्हेन वी विल बी यूजिंग दीज। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है? स्मॉल बी डिवाइड बाय 2 साइन बी। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ। लेट्स से ये मेरे पास ट्रायंगल है, इस साइड को मैं स्मॉल p कह सकती हूँ, इस साइड को मैं स्मॉल q कह सकती हूँ और इस साइड को मैं स्मॉल r कह सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये a और a पे डिपेंड करता है, अगर मेरे पास p q r होगा तो फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है स्मॉल p डिवाइडेड बाय 2 साइन कैपिटल P। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सर्कम सर्कल फाइंड करना है और मेरे पास एंगल P है और ये QR की लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस वुड बी स्मॉल p डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ p। एनी कंफ्यूजन? अभी तक किसी को कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज टेल मी, या कुछ थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क मी अबाउट सर्कम सर्कल। You guys are more than welcome. कोई इशू है तो you need to ask me obviously. Please ask me अगर कुछ नहीं समझ में आया तो. And if it is clear तो please let me know कि समझ में आ गया. All clear? Yes. Okay. All right. Okay. It is clear. ठीक है. Thank you. Okay. Perfect. अच्छा, तो सर्कम सर्कल हमें समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल बात है कि सर्कम सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, उसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर कह रहे हैं, उसकी रेडियस को हम सर्कम रेडियस कह रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूला जो हमें याद करने हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सर्कल की। इसको मैं रेज कर रही हूँ, प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ इट। ये आप सबके पास बुक में है, ये किप्स की बुक से ही मैंने उठाया है। अच्छा, नाउ वी हैव इन सर्कल। इन सर्कल क्या है? The circle drawn inside a triangle touching its 3 sides is called its inscribed circle or encircle। ठीक है, यूं समझ में नहीं आ रहा तो हम ये देख लेते हैं। सर्कम सर्कल में सर्कल बाहर था और ट्रायंगल अंदर था। इन सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल है ये आपके ट्रायंगल के अंदर है और इस सर्कल दिस सर्कल इज टचिंग द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे वो टच कर रहा है, यहाँ पे वो टच कर रहा है और यहाँ पे वो टच कर रहा है। तो इन सर्कल का मतलब है कि सर्कल अंदर है, ट्रायंगल बाहर है, बट दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और द रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस। ठीक है, यहाँ पे रेडियस निकालने का, इन सर्कल के रेडियस निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। ये क्या है? R is equal to triangle means area of the triangle divided by S. Can anyone tell me कि S क्या होता है? किसी को पता है S के बारे में? Side. Very good, excellent. I get your point, all of you. Basically, we will be adding 3 of the sides and we will be dividing it by 2. ठीक है, ये S का फॉर्मूला होता है। तो इन सर्कल कैसे आता है? R is equal to triangle by S, area divided by the sum of sides divided by 2. This is how you find the in radius. ठीक है, any confusions? Are we good with circumcircle and in radius? सर्कम में सर्कल बाहर है और ट्रायंगल अंदर है, इन में सर्कल अंदर है और ट्रायंगल बाहर है, और उनका सेंटर निकालने रेडियस निकालने का तरीका हमें समझ में आ गया। ठीक है ना? ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं इसीलिए बार बार इन पे फोकस कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट में क्या है? एक्स सर्कल, a circle which touches one side of the triangle externally and the other two produced sides. It is called an inscribed or X circle or E circle. हमें यूं समझ में नहीं आएगी, let's go and look at the diagram. ठीक है, ये आपके पास 3 X circles हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके पास एक ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इस सर्कल की, ठीक है,
दिस सर्कल इज टचिंग वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. उसके बाद बाकी इंग्लिश क्या लिखी हुई थी? A circle which touches one side of the triangle externally and the other two produced sides. ठीक है, ये जो बाकी दोनों साइड्स है ट्रायंगल की, जैसे ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसको मैंने मजीद एक्सटेंड कर दिया तो उससे सर्कल को टच कर दिया, और इस साइड को मैंने मजीद एक्सटेंड कर दिया तो उससे सर्कल को टच कर दिया. ये तीनों एक्स सर्कल्स हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो एक टाइम पे मैं तीन एक्स सर्कल्स बना सकती हूँ. ठीक है, अच्छा, again the centers of these circles are the points where the internal bisector of one and the external bisectors of the other two angles of the triangle meet. ठीक है, I'll explain this properly. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The centers of these circles. ठीक है, center of the circles are the points where the internal bisector of one and the external bisector of the other two angles of the triangle meet. ये हमारे पास तीनों सर्कल्स हैं. ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और इसका सेंटर ये. ठीक है, यू नीड टू बाइसेक्ट द एंगल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सर्कल की बात कर सकते हैं हम. ठीक है, किसी भी सर्कल के जो ऑपोजिट एंगल होता है, यू कैन जस्ट बाइसेक्ट दैट एंगल, एंड बाकी दोनों जो आपने खुद से एक्सटर्नली प्रोड्यूस किए हैं साइड्स, you can bisect that and it would give you the center. But center के बारे में information is not very important. The most important part is the question would be about finding the radius. ठीक है, in circle का, x circle का, and circumcircle का. Let's see, radius वाला part यहाँ पे बहुत important है. We need to understand that. Now we will be having three circles. ठीक है, the radii of x circles opposite to the vertex A, B and C are denoted by. This is very important. ठीक है, R1, R2 and R3. Up since we will be having 3x circles around one triangle, तो it depends आप किस की बात कर रहे हैं. The radii of x circle opposite to the vertex A. Let's talk about it. For example, मैं बात करती हूँ इस ट्रायंगल की. दिस ट्रायंगल इज ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए. ठीक है, इसका रेडियस कैसे आएगा? आई नीड टू डू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए. दिस ट्रायंगल इज द एरिया. दिस स्मॉल एस इज दिस फॉर्मूला राइट हियर, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. एंड व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल ए इज बेसिकली दिस लेंथ ऑफ द साइड BC. अब अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस चाहिए, in order to find the radius of this circle, I need to do triangle, area of this triangle, ये जो पूरा triangle है इसका area, divided by S. S क्या है? A plus B plus C divided by 2 minus A. This is going to give me the radius of this सर्कल राइट हेयर. ठीक है, इस सर्कल का. फॉर एग्जाम्पल मैं इस सर्कल की बात करती हूँ. कैन एनीवन टेल मी क्या फॉर्मूला होगा इस केस में? S minus B. वेरी वेल डन. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्मॉल साइड B है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय S minus B एंड सो ऑन. ठीक है, तो आई सम इट अप क्विकली. ये हम सब बातें फिर से रिवाइज करेंगे कोनिक सेक्शन में भी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती हैं. सो फार वी नो कि सर्कम सर्कल इज दिस वन. सर्कल बाहर है, ट्रायंगल अंदर है. ठीक है, हमें सबसे पहले वी शुड बी गुड इनफ टू आइडेंटिफाई कि सर्कम सर्कल कौन सा है, इन सर्कल कौन सा है, एन एक्स सर्कल कौन सा है. ठीक है, इनके सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनके रेडियस के बारे में आपको पता होना चाहिए. सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 4 फॉर्मूलाज हैं. इन सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए आपके पास ये एक फॉर्मूला है. एंड एक्स सर्कल में 3 डिफरेंट सर्कल्स होते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस सर्कल की बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके हिसाब से आपने ये यूज करना है. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स. ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल बी रेफरिंग टू दिस इंफॉर्मेशन अगेन वंस वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, और वहां पे जहां पे भी हमें ये चीज यूज करनी होगी, विल टॉक अबाउट इट. नहीं, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 3 सर्कल्स ही हो सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, ओके. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नाउ. ठीक है,
Okay. It says the measure of the angle of depression of an airport as observed by a pilot while flying at a height of 3000 meters is 30 degrees. How far is the plane from a point direct over the airport? Okay. Angle of depression की बात हो रही है. Let's talk about angle of depression first. ठीक है, आपने ये imagine अब क्या हो रहा है? The measure of angle of depression of an airport as observed by a pilot while flying at a height of 3000 meters. ठीक है, ये यहाँ पे आ जाते हैं. अच्छा, just मेरा cursor नजर आ रहा है? I'm moving this cursor. Can you guys see this? Yes. ठीक है, okay, perfect. अच्छा, अभी angle of depression क्या है? ये बंदा है, ठीक है, एंड दिस डॉग राइट हेयर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है व्हेन दिस मैन विल लुक एट दिस डॉग. तो वो जो एंगल होगा दैट वुड बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन. ये प्लेन है और समझे ये एयरपोर्ट है. अब अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी अबाउट इट. अच्छा, यहाँ पे आई कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वंस आई हैव दैट स्ट्रेट लाइन तो ये जो एंगल बनेगा पायलट का एंड एयरपोर्ट का, दैट वुड बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, अब मैं एक डिफरेंट सिनेरियो की बात कर रही हूँ. जो इस इमेज में है वो इस बंदे का और इस डॉगी का है. बट इफ आई टॉक अबाउट द एरोप्लेन एंड द एयरपोर्ट तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. ठीक है, आई विल मेक इट फॉर यू जस्ट सो वी आर गुड विद इट. यू नीड टू इमेजिन कि यहाँ पे आपके पास प्लेन है. दिस इज योर प्लेन. ठीक है, एंड दिस इज हाउ माय ड्राइंग इज. एंड यहाँ पे आपके पास कहीं पे एयरपोर्ट है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन and this angle right here is the angle of depression. Any confusions with the understanding of angle of depression? Please confirm this. If you are good with it, तो फिर I will explain the next thing. ठीक है, clear. Okay, perfect. Okay. अच्छा, this is the plane. This is the plane right here. ये plane है, ये airport है, and this angle of depression is 30 degrees. Now please remember, प्लेन से एयरपोर्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और एयरपोर्ट से प्लेन का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. ठीक है, एंड एक सिनेरियो में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ सिनेरियो एंड एंगल ऑफ एलिवेशन होते दे आर सेम. तो इफ दैट इज 30 डिग्रीज ये 30 डिग्रीज होगा. ठीक है, एनी डाउट स्टिल हियर? इसमें कोई हमें पता है कि दोनों एंगल्स, अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करी हो तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं. ठीक है, ओके, वेरी गुड. अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद ये लिखा हुआ है कि दी हाइट इज 3000 मीटर्स. ये हाइट है आपके पास 3000 मीटर्स. ठीक है, फाइंड क्या करना है आपने? हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्ट ओवर द एयरपोर्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. हाउ फार is the plane from a point direct over the airport. This is your airport, this is your plane. ये basically इस पॉइंट पे होता अगर ये जमीन पे होता, बट अभी ये 3000 meters above है. This English means that you need to find this length right here. आपने ये length find करनी है. This x is what you need to find. ठीक है, please tell me if we are good with this or not. At times students have issues with this understanding कि ये length क्यों बन रही है, ये length क्यों नहीं बन रही, but it would be x. Okay, very good. ठीक है, अब ये x find करना बहुत आसान है हमारे लिए. This angle is 90 degrees. ठीक है, अब ये हम कैसे find कर सकते हैं? We have the opposite side, हमारे पास perpendicular side है. This angle is 30. इस 30 से perpendicular हमारे पास 3000 meters है. We have that. हमने base find करी है तो what can we use? We can use tan. ठीक है, tan 30 is equal to perpendicular divided by the base
and I need to plug in the values now. Tan 30 is equal to, what is the perpendicular side? It is 3000 divided by x. So this would give me x equals 3000 divided by tan 30. Can anyone tell me कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है? Please do not use a calculator. या आपको पता होनी चाहिए 1 by सारी root values. 3. 1 by root 3. ठीक है. And what would be the final answer? B. Very well done. Excellent. That is correct. ठीक है. We know that tan 30 is 1 by root 3. So x is going to be 3000 into root 3. So the answer is going to be B here. Yes, very good. Any doubts in this question? Any confusions? किसी को कुछ ना समझ में आया हो? Please tell me quickly. अगर one person भी doubt है तो you guys need to ask me. Because अभी इतना time रहता नहीं exams में कि हम अब wait करें. Okay, I'll wait for a few more seconds. Okay, it's good. Clear. Okay, all right. Okay, thank you so much, everyone. Okay, we are good with it. Okay, then we have a simple question. It's easy. ये हमने कल भी ऐसी कोई बात की थी. It says, in a triangle ABC, the side A is 11, side B is 9, and side C is 19. Which angle is the smallest? Now you would be having a triangle ABC. Okay. Let's say I'll make a triangle. For example, this. Okay. This is a triangle. सबसे बड़ी side is C. उसके बाद we have A and then we have B. ठीक है, तो it would be A, B and C. This would be the triangle. So which angle is the smallest? Yes, can anyone guess the answer here? C. C, okay. C is the smallest angle. Is this what you are saying? Okay. All right, I'll tell you. Basically, we have an angle side relationship here. जितनी बड़ी साइड होगी उतना ही बड़ा एंगल होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस साइड C is equal to 19. ये सबसे बड़ी साइड है. This side right here is the longest side. So this angle is supposed to be the largest angle. Here the question is about the smallest angle. The question is about the smallest angle. So the smallest side is A, that is 11. It means that the smallest angle, sorry, 1 second. There is some issue with my writing pen actually. That is why I'm not able to write properly. Okay. All right, yes, very well done, all of you. Excellent, your answer is correct. Smallest angle के लिए we need the smallest side. The smallest side is B, so the smallest angle is going to be B. ठीक है, बस always remember this. So the answer is going to be B here. बस इतनी सी बात है. You need to focus on the smallest side. If the question is about the smallest angle, अगर largest angle होता तो we would have said C. ठीक है, अच्छा. Let's talk about this one. Please try doing this question, all of you. Find the distance of a man from the foot of a 200-meter high tower if the angle of elevation of its top as observed by the man is 60 degrees. Yes, please think about it. I'll give you 2 minutes and then we will talk about the question.
Very good, Maham. Excellent. Okay, let's try doing it together then. Find the distance of a man from the foot of a 200 high tower if the angle of elevation of its top as observed by the man is 60 degrees. Okay? Imagine that this is a long tower. This is the man. The angle of elevation. They're talking about the angle of elevation. Okay? I can make it again. This is the tower. This angle right here is 60 degrees. Okay. This is going to be 90 degrees. This is 200 meters high. Okay, what is the question? Find the distance of a man from the foot of a 200-meter high tower. So you need to find, this is the man, this is the tower. You need to find the distance of the man from the foot. Okay, this is the foot of the tower. So you need to find this x. Again, you have the perpendicular side. You need to find the base. So it would be tan 60 equals perpendicular divided by base, which we need to find. So base is equal to 200 divided by tan 60. And tan 60 is, please do not use your calculator, it is root 3. Okay. Now we know that root 3 would be something between 1 and 2. Like root 4 is 2. Root 3 would be something between 1 and 2. And when you will divide 200 by a number greater than 1, it is not going to give you something greater than 200, right? So this cannot be the answer. This cannot be the answer. Then you need to think about it properly. That root 3 would be approximately 1.6, like it would be greater than 1.5, right? So the answer should be less than 150. And that is how the answer is A. You can take your time and do the entire long division stuff, but that would take a lot of time. Okay, so you need to think about such questions logically, that you ended up having 200 divided by root 3, and you initially knew that root 3 would be something between 1 and 2, right? So फौरन से पहले हमने b and c cancel कर दिया because the answer would be something less than 200. फिर थोड़ा सा और सोचना है कि हमारे पास दो ऑप्शन है लेस देन 200, एक ए है और एक डी है, ठीक है? Then we know कि root 3 would be greater than 1.5 at least. तो उस केस में D cannot be the answer, so the answer is going to be A. Are we good with the idea? Yes, very good. Most of the students gave me the correct answer. It is A. Well done. Okay. All right. Please don't be shy. कोई question हो, कोई issue हो, तो you guys need to ask me. Okay. I hope you are good with this one then. ठीक है? अच्छा. Please solve this question. It is very easy. हमने कल इस बारे में बात भी की थी. This question is for you guys. Sin square theta by 2 क्या होता है? Please recall those half angle identities we discussed yesterday. This is the half angle, right? यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स को. प्लीज थिंक अबाउट इट. इट इज वेरी इजी. हमने कल किया था. वेरी वेल डन. गुड.
Okay, all right, okay, I'll tell you. Basically, yesterday we discussed three half angle properties, and we know that sine of theta by 2 is basically equal to root 1 minus cos theta by 2. Okay, this is what we have discussed already. This is what we know. This is your half angle identity. Up this is sine squared. It means I will be squaring both sides. So this and this would be cancelled. And then sine squared theta by 2 is 1 minus cos theta by 2. So the answer is going to be B here. Yes, good. Well done. Excellent. Okay. Sufyan, are we good with this one? Any difficulties? Please ask me honestly. And all the other students as well. Okay, all right. Very good. Well done. Excellent. Okay, acha. Let's talk about the fifth question. In a right angle triangle ABC with the right angle at B, which one is true? अब right angle B पे है, ये सारे हमें क्या लग रहे हैं? By the appearance of all these formulas, this is the Pythagoras theorem. ठीक है? Right angle B पे, let's imagine making this. ये right angle B पे है. Let's say A है और ये C है. This is B, this is A, and then this is C. ठीक है? तो A squared plus C squared would be equal to B squared. Pythagoras theorem क्या कहता है? The sum of square of the two small sides is equal to the square of the largest side. So A squared plus C squared is equal to B squared. This is your Pythagoras theorem. So the answer is going to be C. Very good. Well done. Good. All of you. All right. Let's talk about the next question. Which one is true? Yes, students, please tell me which one is true. ये हमें क्या लग रहे हैं सारे ABCD? This is the cos rule. What is the cos rule? Very well done. Excellent, all of you. It is D. ठीक है? I told you guys yesterday as well that the good thing about NET is since the data booklet and everything would not be given, so some of the questions would be directly testing your knowledge or memory, I would say. तो हमें पता है कि cos rule में क्या होता है? A squared is equal to the square of the other side plus the third side, then minus 2, then this side and this side, and then cos of this angle, right? This is basically the cos rule. That is why it is D. Okay, well done. Excellent. Acha. Another question about angle of elevation. Please try doing this. This is the third question. If you guys are not able to try doing it, and then we'll do it together as well. Okay, I'll give you time till 3:43. Try doing it 2 more minutes, and then I'll tell you how to do it. Yes, good, Emma. That is correct.
Well done, Marine. Very good. Lower bound, lower bound. I'll explain the idea as well, but very good job. Okay, let's try doing it together then. Okay, let's understand the question first. I just wanted you guys to, think about it by yourselves as well, ताकि आप लोग independent भी हो जाए. And now let's just do it. Okay. The measure of the angle of elevation of a kite is 30 degrees. Okay, so there's a kite. Imagine कि we have a kite here. The angle of elevation means कि यहां से कोई उस kite को देख रहा है तो वो angle of elevation होगा. ठीक है, ये जो angle of elevation होगा ये 30 degrees है. The string of the kite is 250 meters long. मतलब in total जो string आप यूज कर रहे हैं उस kite को उड़ाने के लिए that is 250 meters long. If the say in the string is 5 meters. Now जो लोग ये करते हैं they would be knowing, और जिन्होंने देखा हुआ है कि सारे की सारी string हवा में नहीं होती. कुछ string is used to just tie the kite with the string. ठीक है, कुछ part आपके हाथ पे होता है. तो in total the length of the string is 250, लेकिन you need to subtract 5 from it because you know कि पूरी की पूरी string हवा में नहीं होती. Some part of the string is used to tie the kite with the string stuff, and then some of the string is wrapped around your hands as well. So that is why जो length पूरी हमें ये जो length होगी हमारी this length, this would not be 250, this would be 250 minus 5. ठीक है, this is what this English means. Okay, you need to find the height of the kite. You need to find the height of the kite. This is what we need to find. Height h. And this is the kite. Okay, all right, so now we know that this angle is 90 degrees. The hypotenuse side is what? It is 245. I hope you guys are good with it. If not, ask me right now. You need to find the perpendicular side. So this time around, which trigonometric ratio we would be using? Sine 30 is equal to perpendicular, that is h, divided by hypotenuse, that is 245. So this means that h is equal to sine 30 multiplied by 245. Okay, what is sine 30? ये वैल्यूज अब कैलकुलेटर के बगैर आनी चाहिए. What is sine 30? It is half. Sine 30 is half. 1/2. Very good, excellent. ठीक है, and 245 का half क्या होता है? 122.5. So the answer is going to be D here. Are we good with this question or not? Please tell me honestly. Any doubts? Anything? ये बात समझ में आई है सबको? You can ask Yes, me. ma'am. Okay, all right. Okay. All right, perfect. Okay, let's talk about the 8th question then. Which one is known as the hero's formula? Now, in some books you will find Heron's formula. कहीं पे hero लिखा होगा. The wordings can be different, but the idea is same. ठीक है? This is basically a formula that we use to find out the area of the triangle. ठीक है? And the Heron's formula is basically this, that the area of triangle
is equal to under the root s minus a, s minus b, and then s minus c. Okay, we know what is s. S is sum of sides divided by 2. So the answer is going to be C. Very good, all of you. Sufyan, Ahmed, Mehreen. Well done. Very good. Okay. Okay. Let's talk about the ninth question then. Please answer this. In a triangle, A is 17, B is 19, C is 15. What is the largest angle? C. Well done. No. It is B. Largest angle के लिए we will be looking at the largest side. Largest side 19 है, so the largest angle would be beta. ठीक है? Yes. Very good. Okay. If an isosceles triangle has a vertical angle of 120 degrees and a base of 100 centimeter long, then the altitude will be. Yes, please try doing this one. A, madam. Okay, all right. Let me see. Okay, we have a good variety of answers. Okay. Yes. Yes. Emma, the angle would be 60 then. You're right. And you will divide it. Okay, I got C, D. Okay. All right. D is the correct answer. Let's see why. Okay, I just wanted all of you to try it out. Okay. It is basically a triangle, specifically an isosceles triangle. Something of this type. Okay, it is an isosceles triangle. हमारे पास दो sides of the triangle would be equal because it is an isosceles triangle. This side and this side is equal. This angle is 120 degrees. And the base is 100 centimeters long. This base right here is 100 centimeters long. You are interested in finding out the height of this triangle. We are basically interested in finding out this height right here. Okay? If this entire angle is 120, so the half would be 60. And it is, this red line is a perpendicular bisector. Okay? उसने angle को भी half किया है, and it is going to divide this 100 as well into two parts. ठीक है, तो ये और ये equal parts में हो जाएगा. And now you can think about it. आपके पास perpendicular side है, that is 50, and you are interested in finding out the base. So we can use tan 60 is equal to
perpendicular over base, so it would be 50 divided by x, that is the height, so x would be 50 by tan 60, that is root 3. That is why the answer is D. Okay? Yes, the answer is D. Are we good with this one? Please tell me. Okay, perfect. All right, okay. Let's talk about one last question right here. It is very, very important. It says the angle of elevation of the top of a tower from a point is 30 degrees. If advancing 150 meters towards the foot of the tower, the angle increases to 60 degrees. What is the height of the tower? Okay, I will make this scenario just so we are good with the idea. This is the tower and the angle of elevation initially is 30 degrees, okay, from a point. So this is the initial point and this angle right here is initially 30 degrees. I'm just making the scenario. You guys need to do rest of the stuff. If advancing 150 meters towards the foot of the tower, the angle increases to 60 degrees. Imagine that we have moved 150 meters towards the foot. So now this angle is going to be for example, something of this type. Okay, now this angle has changed to 60 degrees and this is what you need to find. The height of the tower basically. Please try doing this question. Think about it properly and then answer me. It is a detailed question. This should take time. I'll just add a few more details just so we are good. This length right here is 150. Okay? Because the question says if advancing 150 meters towards the foot of the tower, the angle increases to 60 degrees. Please think about it. Very good. Well done. Maham, excellent. Okay, let's try doing this part then. Okay, I'll tell you. We need to find some, we need not read the question again and again. This is what we need to find. ठीक है, हमें ये चाहिए. अब this question would have been very very easy अगर हमें कोई भी एक और साइड दे देते इस ट्रायंगल की जो कि उन्होंने नहीं दी. ठीक है, हमें पूरी की पूरी सिचुएशन खुद से बनानी पड़ेगी. हमें एक साइड फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की पहले और उसके बाद हम एक्स फाइंड करेंगे. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट दिस वे. Okay, this, yes, well done. The answer is C. This is the entire base. ठीक है, इसको मैं base लिख देती हूँ. I know that tan
30 is equal to perpendicular over base. ठीक है? Similarly, tan 60 is equal to perpendicular over, what would be the base in case of this one? Can anyone tell me? अब सिर्फ ये बेस होगी ट्रायंगल की, ठीक है? अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट tan 60. ये बेस कैसे लिख सकती हूँ मैं? I know that this entire length is base. If this entire length is base, if this part is 150, so what can I write? Can I write down base minus 150 here? Okay, well done. Now I can equate both these x's. I can write this as tan 30 multiplied by base is equal to tan 60, and then I will be multiplying it with base minus 150, b minus 150. ठीक है? Now I need to make base the subject. Please find, अब मैंने सब कुछ बता दी, please find the value of base and tell me quickly कि base क्या आ रही है. Use this. I'll write it once again neatly. Just equate both the x's from this equation 1 and 2. This is equation 1. This is equation 2. दोनों x's को equate करके find the value of base and then tell me. I'll write down the new equation here. B is the base tan 30 is equal to b minus 150 into tan 60. Tan 30 is 1 by root 3. So b by root 3 equals b minus 150. And this is root 3. Now I can multiply root 3 with root 3. I'm simplifying it here. It would give me b equals b minus 150 multiplied by 3. And it would give me b equals 3b minus 450. And simplifying would give me b equals 225. Well done, Marine. Excellent. Okay. Now this base has turned out to be, please keep your mics muted. किसी का I think गलती से mic unmute हुआ है. I'm not sure किसका है. Okay, base is 225. This entire base is 225. You need to find x. So now it's very simple. I can use tan 30 directly. ठीक है? Tan 30 would be equal to x by base. या I can directly use this formula जो कि मैंने पहले भी लिखा था. I can use this one directly. This is going to be 225 now, and you can multiply it with tan 30, so it would give you 75 root 3. मैं बता देती हूँ 75 root 3 कैसे आए. That is the last thing because it is important. Now we know that tan 30 is 1 by root 3. So I can write it as 225 divided by root 3 equals x, right? And you can simplify this. किसी को अगर simplification में issue तो let me know. Please try simplifying this and it would give you 75 by root 3. May I tell a simpler method to solve this question? Yes. We can use sine rule to find the hypotenuse, right? And that is very easy. And we'll get the hypotenuse and we can go from there. No, but how will you find the hypotenuse side without knowing any other side? Look, 30. The one side would be 30, the other side would be 120, and then the other would be 30. No, you're talking about the angles or sides? I'm talking about the angles right now. Okay. This is 30.
right? Then that would be 120. Okay, you're talking about this one? This is 30. This is 30. Okay, let me use the annotate feature 1 second. Then, okay, this side would be 30, right? Okay. Yes. This side would be 120. 1 second, where's the pen? This side would be 120. Now we can use sine rule. To find the hypotenuse side? Right. Okay, yes, you can do it that way as well. You can do this way as well. Both methods are correct. Right? Right. Any other question? Arisha, Maham, Mehreen, Saad, Sufyan, please tell me if you have any questions. Okay, all right. Then I'll send you the remaining questions as homework. Please try doing them. Are we good with the 11th question or not? Please tell me. Okay. Yes. Okay. All right. Okay. Then I'll stop sharing the screen. I'll stop the